All right, we are right now here at the Toyota Music Factory. We are here at the Toyota Music Factory right now, and I've got a lot of Indian Americans who really संविधान की बातें करते हैं, नफरत की दुकान पर मोहब्बत की दुकान का बोर्ड लगा करके घूमते हैं। very interesting business. It says Nafrat Chhoro and Bharat Chhoro. This is something I want to also First of all, as I told you, I'm not aware of it. I was not taken away, by the way. That's a wrong word. I had to leave because we were running late. Nobody took me away. I'm not an object that you carry me. Okay? So please don't use those words. ये संविधान की बातें करते हैं और नफरत की दुकान पर मोहब्बत की दुकान का बोर्ड लगा करके घूमते हैं। मैंने आज अखबारों में पढ़ा, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पिलर होता है हमारा स्वतंत्र मीडिया। आज एक खबर पड़ी, अमेरिका गए हुए भारत के एक अखबार के प्रतिनिधि को अमेरिका में जिस प्रकार उसके साथ जुल्म किया गया, उसने अपनी पूरी कहानी पब्लिक के सामने रख दी है। अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान के एक बेटे को, वो भी एक पत्रकार को, और वो भी भारतीय संविधान की रक्षा के लिए काम करने वाले पत्रकार को कमरे में बंद कर करके उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, क्या ये लोकतंत्र को, संविधान की मर्यादाओं को उजागर करने वाले विषय है? क्या अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई करके क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो? आपके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता है। Get a call from Sam. He called me to apologize. He expressed his disappointment over the entire incident. He mentioned to me that this is a formal apology, coming from the Congress in itself, and he assured me that there will be action. He will get to the bottom of this, and he believes in the freedom of press, and this should have never happened. He talked about the entire episode, and we recounted what had happened. And he said it was really unfortunate. He did not wish it to happen the way it did, and he assured me that they would not do this again in the future. And then we just ended the call. But I think Sam did assure me that he will get to the bottom of this and find those who's responsible, and there could be actions against those who are responsible. Mr. Reddy,